Well, today the Delhi High Court will be hearing defamation suit filed by Mahua Moitra against Nishikant, Dubey and Anand Dehadrai. 2 days later, she has been called to record her statement before the Ethics Committee of the Parliament. लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिस पर पहले इनकार किया था महुआ मोइत्रा ने और उसके बाद एडमिट कर लिया। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में डेफेमेशन का मामला सामने आ रहा है, उसमें महुआ मोइत्रा ने क्लेम किया था कि जो भी आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं है। उन्होंने ये भी मानने से इनकार किया कि उन्होंने अपने एमपी लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हिरानंदानी के साथ शेयर किए थे या उनके साथ साझा किए थे। लेकिन कुछ दिन बाद मीडिया में इंटरव्यू देते हुए इस बात को स्वीकार किया महुआ मोइत्रा ने कि हाँ, उन्होंने अपने लॉगिन आईडी डिटेल्स दर्शन हिरानंदानी को दिए थे, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है, यानी कि हर एक सांसद ऐसा करता है। Times Now has accessed pictures of items belonging to Mahua Moitra which have been submitted before the Ethics Committee. Items about which questions have been raised. ये लग्जरी आइटम्स है जिनकी बात चल रही है और आरोप भी ये लगा कि ये लग्जरी आइटम्स दिए गए थे सवाल पूछने के एवज में, फेवर के तौर पर। महुआ मोइत्रा को क्या क्या दिया गया था अगर इसकी बात करें तो 4 फोन उनके पास हैं। अब सवाल ये है कि ये फोन किसके हैं, ये फोन कब खरीदे गए, अगर ये फोन खरीदे नहीं गए तो क्या ये गिफ्ट के तौर पर दिए गए थे, इन फोन्स के ब्रांड और मॉडल क्या हैं। फोन्स के अलावा महंगे सनग्लासेस भी दिए गए महुआ मोइत्रा को। कुछ सवाल फिर पूछे जाएंगे कि आखिर ये सनग्लासेस महुआ मोइत्रा को किसने गिफ्ट किए, अगर उन्होंने ये खुद खरीदे हैं तो क्या इससे जुड़ी हुई कोई रसीद वो सबमिट कर सकती हैं, और ये सनग्लासेस किस ब्रांड के हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं। कैन शी आइडेंटिफाई वॉचेस ब्रांड एंड मॉडल, जिन लग्जरी वॉच घड़ियों की बात हो रही है, क्या वो उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, उनका ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है, कीमत क्या है इन घड़ियों की, अगर उन्होंने खरीदी है तो उसकी रसीद दें। इफ नॉट बॉट देन हुज वॉच इज दिस। Her claim on Darshan Hirandani's affidavit has also fallen flat. Times Now has accessed businessman's affidavit, found that it was signed by him and also notarized. MEA in fact has made it clear that the affidavit has been signed voluntarily and is being submitted to the consulate officials in Dubai by Darshan Hiranandani. The document is signed on 20th of October, but Mahua had questioned the affidavit, claiming the PMO had forced him to sign it and claimed it was neither on official letterhead nor notarized. तो ये सवाल है जो महुआ मोइत्रा को सता रहे हैं। इन सवालों का जवाब उनको एथिक्स पैनल के सामने भी देना होगा। 2 तारीख को एथिक्स पैनल के सामने पेश होंगी महुआ मोइत्रा। जहां तक डेफेमेशन केस की बात है जो उन्होंने निशिकांत दुबे और आनंद देहद्राई के खिलाफ दायर की है, तो वो मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट में आएगा, उस पर सुनवाई होगी। डेफेमेशन के मामले पर अपनी एफिडेविट में महुआ मोइत्रा ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और महुआ मोइत्रा ने साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कोई लॉगिन आईडी डिटेल्स या पासवर्ड शेयर नहीं किया दर्शन हिरानंदानी के साथ। लेकिन उसके बाद जब मीडिया में वो बात कर रही थी तो उन्होंने माना कि हाँ, उन्होंने अपने डिटेल शेयर किए हैं और साथ ही ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि इसमें गलत क्या है, हर कोई ऐसा करता है। शी कॉल्ड इट अ कॉमन प्रैक्टिस। नाउ लेट्स ओपन दिस अप एंड go across to our guests. We have Tausif Ahmed Khan, political analyst, joining us on the broadcast. Tausif, now Mahua Moitra is admitting to sharing the login ID details and password. Earlier, remember, she refused. She said all these allegations that are being leveled against her are baseless, and then she herself admits. No, from the very first series of tweets when she had replied on this issue, she had said that so many MPs, they share their login IDs, and she had in fact requested to make the data public about all the MPs from where they have logged in and if they were present at that time from the place where it was logged in. So there is no change in his stand. Now after Hiranandani's affidavit, which has come to forth, she has given interviews to an anchor and she has dealt with this issue in an elaborate manner, and she has refuted all the claims. See, the charge against her was that of quid pro quo. So quid pro quo basically requires a demand or acceptance of the bribe. And that's not the only charge. In return, an interest. Yes, you know, as far as quid pro quo is concerned, that was the charge. Cash for query. What do you mean by that? As far as quid pro quo is concerned, that will be investigated. So are you conceding that the cash for query is gone? The other charge was, I'm saying there are 2 sets of allegations. I'm not saying one case is gone, another one stays. There are 2 sets of allegations. The other allegation was that she had shared her login ID details, and which Darshan Hirandani has accepted. She's also admitted
Darshan Hiranandani, in fact, says he was drafting and posting those questions as well. And is that fine? You know, Mahua Moitra says sharing it with the PAs is fine, but Darshan Hiranandani is no PA of Mahua Moitra. No, that is to be contested. You are right that she has admitted that the login ID was shared and it is subject to her receiving a SMS on her phone and OTP based on which a login is sanctioned. She has sanctioned the login and she has even allowed her niece to type in the English questions in English. All right. So there's also what we have to look into is whether NIC has rules and bylaws, a detailed rule which applies on the... It clearly says you cannot share these details. It clearly says you cannot share these details. They are not to be shared unless a designated authority permits. That is what the rules say. It is contested by her. She says there is no such rule. Okay. We'll see how the things proceed as far as the ethics panel is concerned and in the court as well, because a defamation case will be taken up. Thank you very much, Tausif, for joining us on the broadcast. Thank you for joining us with your views.